welcome to all of you. Now today we are going to very important part of your syllabi, that is of probability. Before we start probability topic, we should have clear concept of actually basic concepts of probability. In our day-to-day life, we express many our statement in terms of probability. One of the statement you can see on your screen, I have written there are more chance of India's victory in the cricket match between India and Pakistan. When match started, we gives likely statement. Once the match is going on, again we give such a statement. आखिरी बॉल तक भी हम लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया जीतेगा, बट पता नहीं होता है आखिरी बॉल पे क्या होने वाला है. ठीक है. और भी बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में देते रहते हैं. देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं. सी, someone invites you and you are not sure, so how will you reply? Most probably I will reach in the party on time. But you are not very much sure that you are going to be there or going to attend the party, enjoy the party. So this is again one more statement in which you are not certain. The C, the third statement, it may rain within 3 to 4 days. फोरकास्ट कर रहे हैं आप यहाँ पर, और यू आर नॉट वेरी मच श्योर कि बारिश होगी, नहीं भी हो सकती है. तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं और सुनते हैं. इन्हीं स्टेटमेंट में हमारा जो बेसिक है, जिसको हम आज कर रहे हैं, आज हम ये प्रोबेबिलिटी के शुरुआत होती है यहाँ से. तो एक बहुत कॉमन चीज़ हम पकड़ में आ रही है हम लोगों को कि जहाँ पर हम लोग सर्टेन नहीं हैं, अनसर्टेन हैं, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं. स्टेटमेंट में वो हैपन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. चांसेस, यहाँ पे चांसेस हो रहे हैं उसके हैपन होने के और नहीं होने के. बारिश होगी, चांस है, नहीं होगी, वो भी एक चांस है. तो यह बेसिकली बातें हो रही है चांस. सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, अगर आप डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा लाइकली दो नॉट सर्टेन टू अकर. जो बात मैंने अभी पहले समझाई थी वो यहाँ पे डिक्शनरी में भी आप इसे देख सकते हैं, नो इशू. अब आती है बात, हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे. अभी तक हमने स्टेटमेंट देखा है, इसका मीनिंग देखा है. अब मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या कहती है देखिएगा. इट सेज इट इज़ अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट. न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा हैपनिंग नॉन हैपनिंग के लिए, और एक इवेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट. अभी आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है मैथमेटिकल डिक्शन में स्टेटमेंट क्या होता है. इवेंट, यू विल सी व्हाट विल द इवेंट, डेफिनेशन क्या होगी, इवेंट क्या होती है. और 10th क्लास में आपने किया हुआ है प्रोबेबिलिटी, कुछ तो थोड़ी बहुत की हुई है. सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट. सो दिस इज द we should say meaning of probability in numerical aspects, numerical mathematical definition, right? So here we comes the fundamental concepts. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में, हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता है.
तो एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम लोग थोड़े से यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे। देखिएगा एग्जांपल्स क्या होंगे। वी कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल्स, सी एट ए ग्लांस। The first is tossing a fair coin. The second is throwing a pair of dice. The third is drawing a card from well shuffled pack of playing cards, deck of cards be another other word. And the fourth one is recording the pulse rate of a group of persons. These are certain some examples here. एंड टॉसिंग अ फेयर कोइन, आप टॉस उछाल रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। यू आर डूइंग एन एक्टिविटी लाइक ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड निकाला, दैट इज अगेन एन एक्सपेरिमेंट टू यू। रिकॉर्डिंग अ पल्स रेट, पल्स रेट आपने एक नंबर ऑफ ग्रुप बैठा हुआ है पर्सनस का, उसमें आपने पल्स रेट को आपने रिकॉर्ड किया, दैट इज अगेन एन एक्सपेरिमेंट। सो if we consider all such experiment or example, I am sorry, so the result comes here. These all comes within the meaning of experiment, and how it comes random experiment से कैसे connect हुआ। So we have a language, check it out. The language says since every experiment has a number of outcomes, जैसे आपने टॉस उछाला तो आउटकम्स क्या होंगे, हेड आएगा और टेल आएगा। एंड एनी आउटकम्स में अकर इन द एक्सपेरिमेंट, एनी आउटकम्स कुछ भी हो सकता है, may occur in the experiment because all these are based on chance। मैं अभी चांस की बात कर रहा था आपसे। so it is called random experiment, and this random experiment basically we should say random को हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे purely on chance। तो ये स्पेसिफाई है यहाँ पर random अभी, ठीक है। so we come to the next concept of probability। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, next is sample space। So to understand the meaning of sample space, I am going to let us consider an example, throwing a dice। Once you throwing a dice, so you will get the number, all possible numbers कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर आप डाइस को थ्रो करेंगे, इन 6 के 6 नंबर में से कोई एक नंबर आकर होगा। तो actually these all possible outcomes in an experiment, all possible outcomes, total possible outcomes called sample space of the experiment। okay, so please mind it। in other words, we will say all possible outcomes of an experiment is called sample space। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, we will write like as एक्चुअल में ये सैम्पल, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने हैं नंबर, यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हो गए, वी विल राइट लाइक हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, दिस इज 6। so this way we will write here। so sample space is very much clear to you। we will write all possible outcomes of an experiment। okay, so we come to the next term of the probability। so what is event? अब बात करते हैं इवेंट की। so simple definition है यहाँ पर, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। an event is
एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट, जो इसी से एसोसिएट होगी, को जो एक्सपेरिमेंट होगा जो हम कर रहे हैं. एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. एक्चुअली इवेंट को हम लिखते हैं ई स्टैंड फॉर इवेंट और एस स्टैंड्स फॉर सैम्पल स्पेस. ये कुछ नोटेशंस हैं, आप इसको ज़रा ध्यान रखिएगा. टाइम टू टाइम वी विल यूज़ इट. सो इसको थोड़ा सा माइंड को अपडेट रखिएगा इसमें. Likely I am just going to consider the same example here. See there, एग्जाम्पल है वन डाइस इज थ्रोन. तो सैम्पल स्पेस क्या होगा बताइए. 1 2 3 4 5 6. नाउ my question is getting of an even number, कि हम डाइस फेंकें और जो नंबर आए वो इवन होना चाहिए. तो इवेंट मेरी क्या है. इवेंट लाइकली जो फेवरेबल है मेरे 2 है, नंबर 4 है और 6 है. तो ये क्या है. एस इज अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 6 एलिमेंट यहाँ पर है. ई इज ऑल्सो सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट. सो what is E and what is S? Now E is subset of S. This I have explained to you. You can see here, an event is associated with an experiment is a subset of a sample space of that experiment, जिसके लिए हम event कर रहे हैं. So it's very simple. So finally what we will write here. So in other words, if any number of E, यानी कि E में से कोई भी एक नंबर आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे. If any number of E comes up, we will say occurrence of the event. वो event हो गई. और अगर नहीं आया तो नहीं हुई. सिंपल है, right? So come to the next one.